Hello students, welcome to my channel Basic Mathematics. We were discussing about statement, negation of the statement, conjunction, disjunction. We have done it. ये सब पाठ आमे पढ़ी सारिछु. Negation of a statement काहाकु कहंती? Negation of a statement कौन? Compound statement कौन? Conjunction कौन? आउ डिसजंक्शन कौन सेमानकर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमती हमें करू एवं सेमानकर ट्रुथ वैल्यू हमें केमती डिटरमिन करू. तो ये सब जिनस हमें पढ़ी सारिचे. आज पढ़िबा हमें आउ गोटे कंपाउंड स्टेटमेंट व्हिच इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल statement, right? Conditional statement. ये conditional statement हमें मैथमेटिक्स रे केवल नुहे हम यूजुअल लाइफ रे हम अनेक समय व्यवहार करू. कंडीशनल कंडीशन तू मते गोटे पेन देले मु तते गोटे स्केल देबी बा पेंसिल देबी इमती हमें को तू आम घर को आसिले आमे सांग होइकी खेलिबा. तू आसिले आमे खेलिबा, राइट? सेमती आमे कहि परिबा जे कोनसी गोटे कंडीशन. एठी कंडीशन हला तू मते पेन देले, पेन दबाटा होची गोटे कंडीशन. तार रिजल्ट होची I will give you a pencil, right? मु तते गोटे पेंसिल देबी. ए भलिया कंडीशनल स्टेटमेंट हमें यूजुअल लाइफ रे व्यवहार करू. मैथमेटिक्स तो न कहले बोलो मैथमेटिक्स रे प्रति स्टेप रे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट पाख को आसीबा. जेमती if x is a real number then its square is greater than or equal to 0, right? Or its square is non-negative. If x is a real number then x square is a non-negative real number, right? If ABC is a right angled triangle then the sum of the squares of its base and height, sum of the squares of its base and height is equal to the square of its hypotenuse, right? So these are the conditional statements, right? So let us discuss what is a conditional statement, right? A conditional statement is a compound statement. A conditional statement is a compound statement obtained by combining two statements using the connective if then, right? A conditional statement is a compound statement obtained by combining two statements using the connective if then. If x is a real number then x square is non-negative. It is a conditional statement. If x is a multiple of 3 then x square is a multiple of 9, like this. If x is an odd number then we can write it in the form 2n plus 1.
like this so many conditional statements हम पाउछ त एठी कोन कहलु जे जदि डिफाइन करिबा गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट आमे ताकू कहिबा काहेकू ना जो कंपाउंड स्टेटमेंट हम पाइबा दीटा स्टेटमेंट को जोड़ी की दीटा स्टेटमेंट को जोड़ी की आमे जो कंपाउंड स्टेटमेंट पाइबा केमती जोड़ीबा with the help of a connective that is if then व्यवहार करिकी आमे जेतेबेले दुईटी सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करूचु जोड़ुचु कंबाइन करूचु जो नुआ स्टेटमेंट ता पाउचु ताकू आमे कहबा गोटे कंडीशनल statement, right? So if P and Q are any two statements ये जदि जे कोनसी दुईटी स्टेटमेंट हुवंती then if P then Q if P then Q is a conditional statement, right? Eta hoji gote conditional statement, right? If P then Q, if P then Q is a conditional statement, P Q je konsi dita statement tome nei paro, right? If P then Q will be a conditional statement, right? Right. Symbolically, how you write? Symbolically, we write it as if P then Q, like this. If P arrow mark Q. If P then Q, right? Here P is called the hypothesis, the antecedent or hypothesis, antecedent or hypothesis, and Q is called the consequent or conclusion. एटा कहबा हमें consequent or conclusion. If P then Q, if P then Q, right? If P then Q, right? ताले कौन होला जदि if P then लगेबा हमें, right? if लगेई क्रिया में if then लगेई क्रि दीटा स्टेटमेंट को जोड़िले जो नुआ स्टेटमेंट पाइबा ताकू हमें कहिबा ए कंडीशनल स्टेटमेंट. ता माने एठी हमें गोटे नेले सिंबलिकली जदि P एवं Q जे कोनसी दीटा स्टेटमेंट हुवंती ताले if P then Q टा होची गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट. आ ताकू सिंबलिकली हमें लिखु एमती P arrow mark Q. Here P जो arrow mark रो टेल पटे जोटा अछि if something that is called the hypothesis or antecedent, and then पर जहाँ conclusion or consequent आमे ताको ताले गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट आसुची माने तार गोटे एंटीसीडेंट थिबो आ गोटे कंक्लूजन थिबो बा consequent थिबो, गोटे हाइपोथेसिस बा एंटीसीडेंट थिबो आ गोटे कंक्लूजन बा consequent थिबो, राइट? ये हला हमरो कंडीशनल स्टेटमेंट. एटा को हमें पढू, we read it as
P is sufficient for Q. P is sufficient for Q, or P only if Q, or Q is necessary for P. It is a necessary condition. P is a sufficient condition for Q. तामाने P टा जदि satisfy करूची Q टा satisfy करू. ये जो जिंस P is sufficient for Q, or P is only if Q, or Q is necessary for P. Right? Yes. So this is the conditional statement. Let us take some example. Right? Take some example. Yes. We can clear it. Conditional statement हम भला भाବରେ बुझी गले. एबे देखिबा तार केतरा एग्जांपल तम पाखरे भर्ती हेकी अछि, किछि असुविधा नाही. जेमितिया एग्जांपल दे परिबो, नो प्रॉब्लम. इफ देन लगे कि जोड़ी देले सेटा गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट हे. In a triangle ABC, if measure of the angle B is equal to 90 degree, then ABC, this is 90 degree, then AB square plus BC square is equal to AC square. So I am call लिखि परिबा, let P is the statement, measure of angle B is 90 degree in the triangle, 90 degree in the triangle ABC. Q AB square plus is equal to AC square. ताले if P then Q कौन होगा? If measure of the angle B is equal to 90 degree in the triangle ABC, then AB square plus BC square is equal to AC square. ताको हमें if then फॉर्म रे लगे. अनेक समय गोटे स्टेटमेंट if then न लगी कि हेथिबो दबा एग्जांपल. In a triangle ABC, if angle measure of the angle B is 90 degree, then AB square plus BC square is equal to AC square. So this is a conditional statement. Can we call let P hala measure of the angle B is 90 degree in the triangle ABC. Q hala AB square plus BC square is equal to AC square. So if P then Q कौन होगा? If measure of the angle B is 90 degree in the triangle ABC, then AB square plus BC square is equal to AC square. इटा एमती लेखा हेतिला
ताको if then रे in a triangle ABC, in a triangle if this then this एमती लिखला ताको बाकी मु लिख ହେଲା। आमे जदी आ गोटे एग्जांपल नबा जो कथा कहउतली स्क्वायर ऑफ a real number is non-negative, right? Then let x be a real number. Q x square is non-negative. तामने if p then q एटी कोन हबो? If x is a real number, then x square is non-negative. Then x square is non-negative, right? If x is a real number, x जदी एक real number हुए ताहले x square टा non-negative हबो। if p then q करके हम करिए। तेणु एई भलिया भाबरे अनेक स्टेटमेंट सब हमें बनै परिबा, तयारी करि परिबा, कौन कंडीशनल स्टेटमेंट तैयार कर परिबा, राइट? तो ट्राई टू मेक this type of conditional statements. या परवर्ती स्टेप रे हम देखिबा जे how we will determine the truth values of the conditional statements. हमें जंदी प्रीवियस ईयर देखि छे गोटे कंजक्शन गोटे डिसजंक्शन रो ट्रुथ टेबल तयारी करछे, तार एक्सियम कहिछे केते बेले गोटे कंजक्शन ट्रू हबो, केते बेले गोटे नेगेशन ट्रू हबो कि फॉल्स हबो, केते बेले गोटे डिसजंक्शन ट्रू और फॉल्स हबो, से विषय हमें भल भाबरे जानि सच्छु। एबे देखिबा केते बेले गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होची, केते बेले फॉल्स होची। वेरी सिंपल। ये बिगिनिंग रो हमें जदी अटेंटिवली ई काम गुडा करबा त मैथमेटिक्स हम पई केबे भी कष्ट हबो नाही, राइट? केते बेले गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट हमें मनरु किछि भाबी करबानी, हमें वर्तमान ठारू जो एक्सियम्स पढुचु, जो टेबल करूचु, जो रिजल्ट पाउचु ताको बेस करके हम चलिबा। मैथमेटिक्स रे मनरु किछि करा जाय नाही, राइट? कविता लिखि हबो एमति मनरु मन इच्छा, पहाड़ को पर्वत करी हबो, पर्वत को पहाड़ करी हबो, किंतु एठी सेमति किछि करा जीवो नाही, जहा करा जीवो विथ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तले हम फर्स्ट बर्तन रूल पढिबा फॉर conditional statement, when a conditional statement will be true and when it will be false. Let us see. Yes, axiom of conditional statement, right? What is that axiom? Law of a conditional statement. Axiom of a conditional statement. Axiom, right? A conditional statement is false only when its hypothesis is true but the conclusion is false.
antecedent is true, consequent is false. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ conditional statement ର suppose let us take table, truth table, right? P Q, if P then Q. କହିଛି ମୁଁ both may be true, P may be true, it is false, false, true, false, false. ଦିଟା statement ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଉଛୁ ଗୋଟିଏ statement ର truth value either true ହେଇପାରେ ବା false ହେଇପାରେ, ଗୋଟିଏ statement ର truth value true ହେଇପାରେ ବା false ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା statement ଆମେ ନେଲୁ ସେତେବେଳେ these are the possible value truth values of P and Q. कौन हे परे दीटा जगह ट्रू हे परंती बा P टा ट्रू है कि Q टा फॉल्स हे परे बा P टा फॉल्स है कि Q टा ट्रू हे परे बा दीटा जगह फॉल्स हे परंती, राइट? तो these are the possibility, या पर आउ किछ possibility नाही, राइट? तो हमारा axiom कौन कहूची बा लॉ कौन कहूची जे जेतेबेले गोटे कंडीशनल a conditional statement is false only when, yes, in all other cases it is true, in all other cases it is true. A conditional statement is false only when its hypothesis is true. जेतेबेले हाइपोथेसिस टा ट्रू थिबो एठी हाइपोथेसिस के P, if P then Q, this is the conditional statement, this is the hypothesis, this is the conclusion, right? Q is the conclusion here. If P then Q रे ये जो स्टेटमेंट हम पाइचे इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट, if P then Q हम पाइचु तार हाइपोथेसिस होची P, conclusion होची Q, right? If what, if this then this, this is the hypothesis, this is the conclusion. हमर axiom कोन कहला जेतेबेले हाइपोथेसिस ट्रू थिबो जदी conclusion false हुए सेति केवल केवल false, ताले ठी दिने जब ट्रू अछि कोन हबो ट्रू हबो, in all other cases it is true बोली कहैछि, so true false एठी हाइपोथेसिस ट्रू अछि conclusion false अछि, कोन अछि बडा false अछि, राइट? एठी कोन हैछि एटा false अछि एटा true अछि, कोन हबो ट्रू हबो, false false अछि ट्रू, कहीं कि केवल एक गोटिए केस जेते बेले हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स सेति की बेले केवल फॉल्स अछि। हमें ए पर्यंत देखि नथिले जे दीटा जाको फॉल्स होले बेटा ट्रू आसुची, केमति एटा होउची, दैट इज द एक्सियम। फर्स्ट कथा एक्सियम जहा कहिची सेटा मानियो पड़िबो। द्वितीय कथा होउची तुम देखि पार माने कर मु जो प्रथम कहउथिली जे तुम्हें मते गोटे पेन देले मु तुमको गोटे पेंसिल देबी, ए जो कथा मु गोटे स्टेटमेंट कहली कंडीशनल स्टेटमेंट, एटा केते बेले मिछ बोली तुम कहबो सर मिछ कहले, केते बेले कहि परिबो जेते बेले तुमे मते पेन देलो किंतु मु पेंसिल दबाटा मिछ मु देली नाही, केवल सेतिकी बेले मु मिछ कहली बोली तुमे कहि पारिबो। तुमे पेन देलो मु तो पेंसिल देली, तुमे खुशी मु भी खुशी, कोन हेजी ना सर कंडीशन सैटिस्फाई करले। तुमे पेन देलो नहीं, तुमे पेन मुरु देलो नहीं, मु पेंसिल टा देली कोन पाप कली, माने कर मु पेंसिल तुमको देली, तुमको सर मिछ कहितले केबे कहि परिबो नाही, काहे कि कंडीशन थिला जे तमे मते पेन टे देले मु तुमको पेंसिल टे देबी, तम दबाकू जदी अपेक्षा न करी कि मु तुमको पेंसिल देली तमे ब्लेम करि परिबो नाही जे सर एठी मिछ कहिथिले। केवल गोटिए केस रे कहि परिबो जेते बेले तमे दबो पेन मु तुमको पेंसिल दबई नाही। द्वितीय जिंस आ गोटे हला
जे तमे पेन देलनी कि मु तुम पेंसिल देलेनी केही का किछि कहबार नाही मु भूल सत्य कहिछि कि मिछ कहिछि केही कहि परबेनी राइट अरे आमे जणे लीडर जेतेबेले आसुची भोट भिक्षा करिया पई तमे मते भोट देले मु तुमको तमरा एई कामटा करि देबी तम गां को और नदी रे रास्ता पई गोटे ब्रिज कर देबी तम गां को जीवा को मन करो नदी अछि मु से नदी ऊपर गोटे ब्रिज कर देबी तमे ताकू भोट देलो से लीडर हला पर से गोटे ब्रिज कला कोन कहबो आम नेता भल नेता हमको ठीक कहिछ तमे मूलरू तांकू भोट देलो नहीं अन्य काहाकू भोट देलो ताहले तमे केबे कहि परबेनी जे तुम कहिदिलो बा मते भोट देले मु एटा ब्रिज करी तुम तो भोट देइनो तांकू आ ब्रिज कोन करबी से मने कर तमे भोट देई ना हो किंतु से कोनोसी उपाय रे करिकरी ब्रिज टे कर देला छाड़ लोक माने मते भोट देलेनी तांकर गां को रास्ता पई मु नदी ऊपर गोटे ब्रिज कर दे तमे कोन कहबो एटा मिछ बोली कहबो केही कहंती ना तमे भोट देलानी कि से रास्ता ब्रिज करले नहीं ताले तमे मिछुआ कहि परिबनी केवल गोटिए केस रे तमे कहबो एटा मिछुआ जेते बेले तांकू भोट देई तमे जितेइलो राइट किंतु सी तम कथा रक्षा कले नहीं सिटी ब्रिज कले नहीं सेतिक बेले तमे कहबो ये नेता पूरा मिछुआ राइट एग्जैक्टली सेही भलिया इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट ये सब गुडा कहउची कंडीशनल स्टेटमेंट ताले एटा केते बेले फॉल्स हबो जेते बेले हाइपोथेसिस टा ट्रू थिबो कंक्लूजन फॉल्स दिस इज द ओनली केस व्हेन इट इज फॉल्स ए गोटी केस रे एटा फॉल्स हो आ सब बेले एटा ट्रू अछि सो दिस इज अबाउट योर कंडीशनल स्टेटमेंट राइट about your conditional statement now we will read a biconditional statement right let us read biconditional statement conditional biconditional before that we will discuss some more statements about a conditional statement next time we will discuss about biconditional statement today some more things there are three different terms statements converse inverse and contrapositive of a conditional statement एतिक जिंस आज पढ़ा हमें कंडीशनल स्टेटमेंट कोन पाइले बुझी गेलो में कंडीशनल स्टेटमेंट काहाकू कोन सपोज लेट if P then Q be a conditional statement right be a conditional statement eta mane karo gote conditional statement hela yes this is a conditional statement if P then Q is a conditional statement right then it's converse then it's converse converse kon habo is if Q then P eta habo converse of if P then Q तमने एठी जोटा हाइपोथेसिस थिला से हे जीवो कंक्लूजन जे कंक्लूजन थिला से जीवो हाइपोथेसिस if P then Q रो कन्वर्स आसीबो if Q then P
and inverse is if negation of P then negation of Q, right? if P then Q ra inverse asibo eta if negation of P then negation of Q and contrapositive term गुड़ा को मन रखियो पड़ो contrapositive is if negation of Q then negation of P एगुड़ा को होचंदी सबु three different terms on conditional statement, right? suppose आमे जो कहिथिले तो एट नेथिले if P then Q थिला कौन थिला if measure of the angle B is equal to 90 degree in a triangle ABC, then AB square plus BC square BC square is equal to AC square. ए टिके पूर्व में डिस्कशन करूथिले एटा होची हमर गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट तले एटी कोन करबो तमे P बाहर कर देबो measure of angle B is equal to 90 degree in a triangle ABC, right? Q हला AB square plus BC square is equal to AC square. এটা হচ্ছে if P then Q এর conditional it is a conditional statement এর converse মনে রাখিবো converse আসিবো if Q then P তো yes then converse of the given statement is if Q then P. If Q then P एटी कौन हबो if AB square plus BC square is equal to AC square in a triangle ABC, if in a triangle ABC if AB square plus BC square is equal to AC square, then measure of the angle B is 90 degree. Fixed, right? Then inverse is if negation of P then negation of Q. कौन है बेटी? In a triangle ABC, if measure of the angle B is not 90 degree, is equal to 90 degree, then AB square plus BC square is not equal to AC square. If negation of P, what is the negation of P? Measure of the angle B is 90 degree in a triangle ABC. This is the statement. What is its negation? Measure of the angle B is not 90 degree in the triangle ABC. By in the triangle ABC, measure of the angle B is not 90 degree. Then negation of Q. Q कौन थिला? AB square plus BC square is equal to AC square. एटी कौन हबो? AB square plus BC square is not equal to AC square. If this, then this.
This is called the inverse. And contrapositive. Contrapositive is what? If negation of Q, then negation of P. ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହବ ଏଠି? If negation of Q, if in a triangle ABC, if AB square plus BC square, is not equal to AC square, then measure of the angle B is not 90 degree. If not Q, then not P. If AB square plus BC square is not equal to AC square, then measure of the angle B is not 90 degree. Right? So this is about converse, inverse and contrapositive of a statement. Converse, inverse and contrapositive of a statement. Right? Bujhele, this is about your converse, inverse and contrapositive. Okay. And their symbolic representation. If P, then Q ra converse asibo. If Q, then P. Inverse asibo. If negation of P, then negation of Q. And contrapositive asibo. If negation of Q, then negation of P. Right? Actually, contrapositive is the inverse of the converse. Contrapositive is the inverse of the converse. We'll discuss later. While we'll discuss about equivalent statement, etc. In that case, we'll discuss. Yes, next time we'll discuss about a biconditional statement, its axiom, its truth values, truth table, etc. with some examples. Okay. Thank you so much. Try to subscribe my channel and like it. If you get pleasure from this, you are benefited. And also, ତମେ ସବୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଇଏ କର, ଟିକେ share karo, and they should subscribe the channel so that thus this channel will get strength, so that we will go into the deeper into the course and you will gain so many things, right? There is no need of going tuition. Okay, thank you all.